So my next topic is students how to insert merge fields. So place the cursor at the position where you want to insert the record fields. Firstly, this is our letter and we have to place our cursor at the position जहाँ पर हम अपनी record fields चाहते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जिनको मैंने लेटर भेजना है उसका नेम लास्ट नेम यहाँ पर शो आउट हो जाए, तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पर पोजीशन करूंगी. इसके बाद मैं मेलिंग्स टैब में जाऊंगी एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन in the right and insert field group. This is the right and insert field group in the mailings tab and I have to click on the insert merge field. Okay, so when I click on this, the insert merge dialog box appear with a list of field names. Okay, these are the fields. For example, I just need first name and then need last name and I need address. I just place the cursor here and enter press, and city. So if you want this city after this, okay, so I just want this record fields here. So I have just selected from the mailing tab and right and insert field group and click on the insert merge field button. The insert merge field dialog box appears with a list of field names. I have just clicked on the particular fields and insert button click. So this is about how to insert merge fields. Students, my next topic is how to view the merged data. So firstly, I have created the main document and then I have inserted the merged fields. My next topic is how to view the merged data. We can check whether Microsoft Word has picked up the data source according to the merged fields or not by viewing it on the screen. हम ये देखना चाहते हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमारा जो डाटा सोर्स हमने बनाया था, हमने जो 3 एड्रेस दिए थे, क्या वो उसको पिक कर पाता है या नहीं कर पाता. सो क्लिक ऑन दी प्रीव्यू इन रिजल्ट बटन इन दी प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब. So firstly I have to go on the mailing tab and then on the preview result group and click on the preview result. See here, when I click on this preview result, the name are showing here. Okay, see, Kirti Sharma, sector 14 Sonipat. This is my first entry, and if I click on this arrow, this is my second entry, and if I click on this is my third entry. Students, see, I don't need to write my addresses. I have just created my data source with the following fields, and I just created my main document and then create the mailing list, and then I have insert merge fields and then view the merge data. Okay, so this is my merge data, means this is the main content and the data source. My next topic is how to print the letters. You can take the printout of your letter with the merged data of data source in order to print the letter. So click on the finish and merge button in the finish group on the mailing tab. हमने करना क्या है, सबसे पहले हम मेलिंग टैब में जाएंगे एंड देन हम फिनिश ग्रुप में जाएंगे एंड देन हम फिनिश एंड मर्ज बटन पर क्लिक करेंगे. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन द कंप्लीट द मर्ज सेक्शन इन द टास्क पेन एंड देन क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन अंडर द मर्ज सेक्शन. तो हमने करना क्या है,
हमने प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या चीज़ प्रिंट करनी है। अगर आप सारी की सारी मतलब कि हमने 3 एंट्रीज करी है, तो अगर आपको तीनों को प्रिंट करना है तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी अभी हमारे यहाँ पर प्रिंटर अटैच नहीं है तो हमारा प्रिंट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज आप ऑल पर क्लिक करके रखेंगे एंड ओके कर देंगे तो आपकी ये तीनों जो हमारा था, तीनों एड्रेसेस थी, तीनों को ये प्रिंट कर देगा। Okay class, I think you all have understood about data source, main document and the merging fields and how to print it. For print you have to click on the mailing tab and then click on the finish group and then just click on the finish and merge option and click on the drop down arrow here and then click on the print document. So if you want to just print only this document, then click on the current record. If you want to print all the addresses, then click on the all and click on the OK button. Okay class, thank you.